और फिर इशू स्लिप से उसको मूव करेंगे. Right. Okay. So बरोबर ना? This is the supplier name. I am searching that order. Pending कारवाई. Okay, that is your end-to-end workflow when how an order item is procured, and then from that procurement, how it moves to GRN, and then ultimately by issue slips moves from one department to another, finally to the dispatch department. Exactly. Not up to the dispatch department, but we can show you up to store, because after that it is used in assemblies, then it is going to be made, and then it will be moved to dispatch or ready machines or finished stock. Okay. So this is the order that we have placed for Eroth device Thane. That item was item code is 100522. That's C type 4-pin PCB mounted DIP connector. The quantity is 15,000. Right. Okay. You can see that the PO is active status, and still it is pending. Okay. So if I double click here, that PO gets opened, and you can see the details that it was placed on 6th of July. And now we have received the material, and we have received 50,000 pieces against this order, and we have that supplier invoice with us. Okay. So I'm going to make GRN for this, and I will go to GRN icon. Then I will first make that provisional GRN, and then this is raw material again. So we'll go for raw material only. 1 second, let that screen come. I have selected provisional GRN. Then I will press plus. So it will show. घेतलं का त्याने? Well, so now it's showing business location, that is MIDC, then supplier, that is Eroth devices Thane. Now barcode टाकता ना तुम्ही? Code is this. Now it is showing me this data. Now I will only enter here the quantity that I have received, right? Okay. Then I will also again update here the supplier invoice number, that is ED oblique CI oblique 2627 oblique 0057. Then supplier invoice date is 15 July. So I will update it here. Okay. So I will save this. This provisional GRN is made here. I will save it only using this save button. Okay. I will go for provisional GRN. Yeah. Yeah, Pakka GRN. So this is raw material. I will select this raw material GRN. Then I will say okay. Then business location is again MIDC. That is inward electrical. So I'm going to invert this in inward electrical only. So I will close here because it will again come there only. Barcode is 100522. Then now see, it's showing me the supplier that we have already made a provisional GRN for. Okay. If there are some 2 or more suppliers that we have already made a provisional GRN, it will show all those here again. Because I have Eroth only, so it is showing Eroth only. So I will say okay here, and that supplier name will automatically be shown here. So I will say show okay. Only the ones where you've actually created the provisional GRN first.
Yes. You cannot directly create a raw material GRN. You have to first create a provisional GRN and then only you can create a provisional one. Yes, then only we can go for Pakka GRN. We call it Pakka GRN in our local language. So provisional GRN is Kacha GRN. Yes. Okay. Because there we are not checking all those prices and all that. We are only checking that supplier invoice is there and the quantity is there. So that then we are making that provisional GRN. And further, whenever it goes to inward inspection, then we check all that all the features of that item against quality plan. So I will select this EROT and say OK, and it will again show us the window for making further GRN. So this is the important thing while making GRN, because all those things are to be checked by whoever is making the Pakka GRN. That PO number is 688, then supplier name is this one, code is this one, then rate per unit mentioned in our PO was 1.65, right? Okay. So he will check whether the same rate is given in supplier's invoice also. If there is the same rate, then he will go for the GRN. Otherwise, he will keep it pending and talk to purchase department that the GRN, that the invoice is not received with the same as per your order. Either you have to change your PO or get the new invoice from the supplier, like that. Okay, so we will go for this because we have received the invoice as per 1.65 rate only. Now I will enter that in supplier invoice number here that we have entered in provisional GRN. I have copied that. Then I will update the date of that supplier, invoice date of that supplier. Then select आता काही नाही ना आता फक्त इथे तुम्हाला accept now that is further, it is simple. We have received 15,000, we have accepted that 15,000, and we'll say that this GRN is made. We will check that invoice total amount, this amount with that hard copy invoice received to us, and we will confirm that it is same, and we will save that here. Okay. Rejected quantity I will enter as 0. And then I will press OK. Item complete nahi ka? Okay. Item complete and invoice complete are the two things given, where the two things given because maybe there are the item is not complete. Nowadays we are not using this, but we have to by default we have to use actually this. If that 15,000 is not received, suppose he has sent only 7,000, that item is not complete. So that PO remains active till that 15,000 items are received at our end. Okay. Now we can check it here that item is completed, and again invoice is also completed. We can check it here, and that PO will be now go to completed, like that. So this item is completed. I have ticked it as item is completed, and I will say it as okay. What is the difference between item completed and invoice completed? Invoice completed, I think it is related something about all the items in that PO. There are more than 2 to 3 items in same PO. We have sent that PO to the single supplier, and he has sent only one of the items. Then that invoice is not completed, like that. So I can tick here again invoice completed also, but generally we are not ticking that. That's why I'm not going for that now. I will press only OK. Okay. Should I press OK? Yeah. This is again, it will get checked whether the tax and all that these things are clear or not, and then it will be saved.
आता याच्यात अजून आयटम ऍड करायचे असेल तर हा. ते करू शकतो. If there are many items from same invoice and same PO, then only we can add next item, because it is showing here the barcode. If I enter here, suppose there is again a second item such as one battery or something he has sent, and we have placed the PO for that also, two error devices, then I can enter the barcode here for that battery and can get added the next GRN for that battery also. Okay, but then see, when a single GRN will be corresponding to a single purchase order, I believe. Yes. So in Exactly. that purchase order, if I have 5 items, so like, I mean, the GRN, can I have those 5 items, right? Yes, it can have 5 items, 2 items, single item, 3 or 4, anything. Okay. So now, I mean, why not show all of the items from the PO over here in this report? Because we have made provisional GRN for that single item only. Okay. If I have made all 5 items provisional GRN at the time of provisional, then it will show us one by one all those items. Okay. So it is like that only. So I will save it here, and that 100522 stock will be moved to inward electrical department. So that stock will be already get increased. That we will see. We have not checked that actually before, that the stock of that department is 0 or something less than 15,000. Shall we check it, or can we go? Let's check it. Let's check it. So I have to cancel this one. Yeah, so cancel it then. Okay. So in report, we see generally the stocks of those items. So we just see the location wise item stock by code report, and go to that MIDC factory location. Then I have to enter the code. And it is showing me that all those this item is in material receiving department, because I have made provisional GRN for that item. Okay. As yesterday sir told that whenever a provisional GRN is made, that stock is moved to material receiving department. But we do not consider this for our PPC, because this is again checking. And this is not checked properly, so we cannot consider this as our final stock of any item. Okay. So that gets checked first, and then it will move to inward electrical, and then it will be get by a store electrical department. So you can see 15,000 stock is there for material receiving department, and there is no inward electrical showing that it is having 15,000 stock, and there is no stock in inward department. So inward department is not displayed here also. Okay. So I will close this and again go for GRN. Then I will make Pakka GRN further. पाच मिनिटात करतो. Invoice number I will get copied. Then 15th of July. Then accepted quantity 15,000. Rejected quantity 0. Item is completed. I will say okay. And here, if I save now, then it will the stock will get moved from material receiving to inward electrical. Shall I save it now? Here there are some few things rejection note.
So this is currently we are not using because the thing is that we cannot reject it from here. 2 to 3 things ऐसा है जब क्वालिटी प्लान के अगेंस्ट मटेरियल नहीं मिलता है हमको तो ये हमने ये प्रोविजन करके रखा था पहले कि यहाँ यही से हम मटेरियल को रिजेक्ट कर दे राइट बट आफ्टर जीएसटी केम इन टू थिंग तो क्या हुआ कि हमको जो सप्लायर को जो भेजना है वी कैन नॉट सेंड इट ऑन डिलीवरी चलन और दैट something like that. So we have to make invoice of that item again and send back to supplier. So this is not used nowadays. Okay. What we are doing, suppose हमारे पास 15,000 pieces आ गए and that those are rejected, but we are making JRN of that and we are increasing our stock. But further, we are making the invoice of this item only to the supplier back on the same price, so that the thing remains the same. Okay. Now we are not using this thing, but further sir can again discuss about this and what we can make better for our next ERP and all that. Yeah. Okay. So I will save this. Right. Now if we check the stock of this item now, टोटल आइटम अभी अलग तो स्थल में थे. Now the material receiving department stock is 0 now, and the inward electrical stock is 15,000 pieces for this item. Fine. Now with the interdepartment issue slip that is called as so I will show you that. Should I close this? Yes. Now, how to move this inward department stock to store? So we have types of issue slips, and here is the issue slip icon. And if I click here, then it will show me types of issue slips. So this is create issue slip icon. एकदम simple है. MIDC factory, then from inward to store electrical. Then I will just enter 100,522 and will say it is showing me everything. We will discuss about it. See, it is showing me issue slip number, then issue date, then from department and to department. Then I can go on adding one by one from this barcode tab. Okay. One issue slip can have more than One items. So here I can go on adding, but now I have to move only that 100,522 item from inward to store. So I have updated only one item. Then, as you know, that it is always that issue slip is always made by the receiver. So the receiver's name will be added here. And we can save it. So I will save it because we know that it is further going to be stored in store electrical only. So I'm saving it. Okay. Is this okay? All these things I'm going to tell you further. These icons. Right. But now I can. Here we can change the quantity also. Suppose this is the thing, then I can change the quantity. Because there are more than 10 or 15 items, then I have to change again only one item quantity, then I can make it from this icon. So I'm saving it. Hello? Yes. Well, one second. हाँ मैम बोलिए ना.
किस बारे में बात है मैम? बोलिए जल्दी से, मैं मीटिंग में हूँ. नहीं नहीं. So this is how we can make further issue slip. So if I go to this issue slip icon now, and I want to this अभी जो मैंने आपको दिखाया वो सिर्फ इंटर डिपार्टमेंट वन आइटम टू बी मूव्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट, ऐसा इशू स्लिप था, राइट? नाउ इफ आई वांट टू मूव assembly wise item from store to assembling department, then we have this icon. So what I have to do here is from department store to preparation. ते माझ्याकडे नाही त्याचे राइट्स. 1 second ना, I have to नाही ना, तसं नाही जाणार. थांबा जरासं. We have some authorizations to be given before making any issue slip. So in department icon, that authorization is given. While making the department, we have this thing, restrict stock inward set employees. So I can add here my name. To preparation. So अभी ये जो है वो बीओएम के अगेंस्ट, मतलब कि छोटे पीसीबी जो हम बनाते हैं, जो भी बनाते हैं वो प्रिपरेशन डिपार्टमेंट में बनाते हैं. सपोज मैं प्रिपरेशन डिपार्टमेंट की हेड हूँ और मुझे आज 10 पीसीबी बनाने हैं एनईपीएल 696 सपोज. सो व्हाट आई विल डू कि एक इशू स्लिप से मैं मटेरियल जो भी है 696 के लिए लगने वाला, वो सब मटेरियल मैं इशू करूंगी पहले स्टोर इलेक्ट्रिकल से प्रिपरेशन में. तो ये इशू करने के लिए वो बीओएम में सपोज 10 आइटम्स है. सो I don't need to enter one by one item. I just will click here and will say that which BOM I want to get. सहाशे 54 काय नकोय मला, कसं काय घ्याल तुम्ही ते? एनपीएल 696 घ्यायची मला. So this is one of the PCB that we make in our preparation department, C005284. It has a BM that we have already checked how to see that. There are only 3 components in this BM. One is that we have inverted, 100522. Second one is the 2-pin male connector, and third one is the PCB, blank PCB. Only 3 components are there, and I just want to just 1 sec, ma'am. Can you hold on for 1 sec? Yes. These two things that you know what they are used for. This is for add BOM elements against items. This I'm already updated that we are going to take schedule for 1 PCB from store electrical to department preparation. Now, which PCB, to check that PCB, I have to click here. Then it will show me the list of the items, and I will have to select one of them. So I know that item name is NPL 696. So I will just go for search for this item. I know this is that PCB. So I will select it and say, okay. Now it is asking me quantity, right? So I will say here 10. Then I will say, okay. Now it will give all those things. See, quantity to transfer, available quantity, measuring unit, material type,
and is it auto make or not, like that. Hmm. So these three items that we have already seen in the assembly of NPL 696, right? Mhm. All those items are displayed here, and it is showing me that you want to transfer these 10 each items from store electrical to preparation. Hmm. Right. So this is received by some person, Dilip Padvi. So I will enter his name and I will just save this. Now what will happen from store electrical, these 10 items stock will be decreased and this item, this stock will be increased at the preparation end. Okay. Hmm. You want to see that stock in preparation department first? All the for this. Yeah. Okay. I will write down the three item codes first. 1000522, then second is C004906, and third one is C005232. First one is that C-type connector, then second is the 2-pin mail, and third one is the PCB, blank PCB. So I will cancel it here further. Then we will check in preparation department the stocks of all these three items. Mhm. See, in preparation department, that is only 14 now. 100522 stock is 14, right? Another department stocks are again there, but we are going for only preparation. We will check only for preparation department stock, right? Mhm. Then we will check next item stock, that is C004906. It is showing that the stock of this item is 4395 in, sorry, in preparation. No? There is no stock in this department, that is 0. Right? It is not showing that preparation department, so it means that there is no stock of 4906 in preparation department, like that. Mhm. So I have written it as 0. Then further we will check for C005232. There is again no stock for this item in preparation, that is again 0. So we will go again for that issue slip. If the destination department is wrong, or maybe one of the items is correct. Actually, I'm not able to hear you properly. Am I audible now? Hello. Yes. So what I was saying is, what if I make a wrong issued slip? But means if the source, the destination department is wrong, or if the quantity of the item is wrong, then what do I do? No, actually, see, uh, we have assigned authorization for each department. Means suppose I am a department head for preparation department, na? So I am only I am given the authority that I can fetch the stock from store to my department. So there is nothing like that will happen. And if the quantity is again, suppose as per you are saying, I'm not entering 10 and I'm entering it as 100, then I can give it back to again store department, or I can make it 100 PCBs. Okay. And again, if there is no stock for 100 PCBs, then it will show me red. That Acha, at the source only. store doesn't have that stock for 100 PCBs, then it will show no, you cannot take 100. There is stock of only 10 and you go for 10 only. Okay. We will check it here again. So it will get again clear from store electrical to preparation. इथे ना? Suppose I say here 10,000.
it is giving me error. Item quantity for more than available quantity 17. Do you want to proceed? Again, if I want to, I say proceed, yes. Then it is showing me that it is 17 only. So I can remove this item and further I can take the schedule, because I know that tomorrow this PCB will be received to me, and till then I can make remaining say 10 pieces or 17 pieces like that. Yes. Huh? So I'm not doing that. I'm saying it was only 10 because I know 10 quantity stock is available in store. So how? Now you can see, I will add the name, and now I'm saving this issue slip. Now we can see that we will see that the stock of store department will be getting decreased, and preparation department stock will be increased. So I'm saving this. Now we'll go for stock checking report. It was showing 14. Now it is showing 24 in preparation department. Next is in preparation department, it is showing 10. Previously it was 0. Again, we will go for the last item. It was 0 previously. Now it is showing 10. So like that, the 10 PCBs stock is moved to preparation department. After that, what preparation will do? It will prepare those PCBs. Then it will pass the entry of make of these 10 PCBs. There is a make entry here. This is our make icon screen. So it is showing continuously the entries. Just now at 3:13, there was one entry was passed. So we can also make factories MIDC. Then department is preparation, that we were issued the material. Now here it is showing make and break number, that issue slip number. Then it is showing the date. Now it is asking me for select the item. Now I know that item, that is NPL 696. So I will say okay. Now it is asking me for quantity. I am giving only 2 because only two PCBs are make. So again, that is showing me. I will add here my name just for the sake of. No, it is not giving me. Dilip prices now द्यावं लागेल मला. Like that, when I press here OK, that 2 stock will get again increased at preparation, and each 3 items 2 stock will get decreased from preparation, like that.
Should I close this and again go back for checking the stock of NPL 696 in preparation? Hello, Shantanu sir. Yes. Should I go back and first we want to check that stock of ready NPL 696 in preparation department and then make this two quantity make? No, so every time you have to go into that department only, क्या? Yes. कौन सा department में? No, I mean to say, if we are moving it from one department to another, or if we are using it, so every time we have to go and check. Like, I mean, in this dialogue, there is no way of looking at the available. ये सेम स्क्रीन पर अवेलेबल तो नहीं है फिलहाल, है ना? अच्छा, ठीक है. So एक बार वो देख हाँ. लेते हैं. हाँ, वो अगर मिल जाता है ना तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि हमको बार बार वो That's what I said. Like, I mean, this is too cumbersome. Every time you are going over there, so why not just show it here only on the screen? yes. बट हम क्या करते हैं, हम लोगों को पता है कि ये होने वाला है ऑटोमेटिकली, सो वी डोंट गो टू दैट लोकेशन वाइज स्टॉक स्क्रीन. हम क्यों जा रहे हैं बार बार दिखाने के लिए? जस्ट टू शो यू दैट हाउ इट इज गोइंग टू बी मेक एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज एंड डिक्रीज. फॉर दैट मैं आपको सिर्फ एक क्या बोलते हैं उसको, पूरा वो बोलते हैं मराठी में, दिखाने के लिए मैं आपको वो रिपोर्ट में जाने के लिए बोल रही हूँ बस. Okay. हाँ. लेकिन अगर वो ऑन स्क्रीन दिख जाए ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि ये इतना स्टॉक अवेलेबल है तो मैं आज इतना मेक कर सकती हूँ. हाँ, ये तो आइडियली वैलिडेशंस होने चाहिए ना कि इतना ही कर सकते हो. अभी क्या होगा अगर जितना है उससे ज्यादा अभी यहाँ डाल दिया तो क्या प्रॉब्लम होगा? 10 तो मैं मेक ही नहीं कर सकती हूँ. मतलब कि मैं अगर यहाँ पे 100 डालती हूँ, अगर मैं यहाँ पे ओके बोलती हूँ तो वहां पे है ही नहीं उतना स्टॉक, तो वो बोलेगा कि आपके पास है ही नहीं उतना करने के लिए, ऐसा एरर देता है फिर वो. अवेलेबल 24 बताया ना उसने इधर. हाँ, सो अवेलेबल मैक्स 24, 24 है शॉर्ट आपके पास. क्वांटिटी 76, ऐसा सब बता रहा है वो. तो मतलब मैक्स 24 ही है आपके पास में. हाँ, लेकिन वो एक आइटम 24 है, बाकी के आइटम तो 10-10 ही है ना, वो तो हमने देखे है ना. तो जब तक तीनों आइटम नहीं होते वो मेक नहीं करेगा. ओके, समझ गया मैं. ओके, तो मैं अभी इसको क्लोज करती हूँ एंड अगेन इफ मैं अगर इसको अभी मैं 10 में इसको मेक कर देती हूँ तो वो 10 का क्वांटिटी बढ़ जाएगा. दैट्स इट. ओके, कर दूं? यस. ओके, मैक्स 24 कर सकते हो और 10 कर रहे हैं अपन. नहीं कर सकते 24, क्योंकि बाकी के दो आइटम्स हमारे पास थे नहीं ना. अच्छा, देखो, पूरे चाहिए उसको. ओके. यस, अगर मैं 24 भी यहाँ पे देती हूँ ना, ओके करती हूँ यहाँ पे, तो वो दिखाएगा ये एरर हमको, क्योंकि ये दोनों आइटम अभी शॉर्ट है उसमें, लाइक दैट. तो जब तक वो तीनों आइटम उसके पास है नहीं वो मेक ही नहीं कर पाएगा. मैं मैक्स तो 10 ही कर पाऊंगी. तो ये अगर मैं सेव कर देती हूँ तो ये मेक हो गया है उसका 10 का, और उसका जो स्टॉक है अभी हम रिपोर्ट्स में जाके हमको फिर से देखना पड़ेगा कि उसका स्टॉक बढ़ा है कि नहीं. ओके. MIDC C00, ये जो 696 PCB था तो उसका कोड था C005284. तो इसमें और एक भी है कि आई हैव टू एंटर ऑलवेज द कोड एंड नॉट द नेम. राइट. ये भी एक हिच है इसमें. तो अभी प्रिपरेशन में उसका स्टॉक जो पहले से था वो तो वो बढ़ गया है, 261 हो गया है वो. पहले वो कुछ 251 वगैरह हो सकता है, लाइक दैट. तो ये इस तरह से ये पीसीबी का मेक हुआ. ओके. सेम वी कैन मेक कॉम्बिनेशन, सो वी विल गो फॉर दैट नाउ, राइट? ओके. हाँ, जाए ना इसके लिए आगे. हाँ. तो एक असेंबली मेक है और दूसरा जो है वो कॉम्बिनेशन मेक है. सो आई हैव वन डेटा अवेलेबल विथ मी एंड आई विल शो यू हाउ वी मेक दैट थिंग. सो जैसे हमारा इशू स्लिप था असेंबली के लिए,
वैसे ही एक एक इशू स्लिप कॉम्बिनेशन के लिए है जिसको हम शेड्यूल इशू स्लिप बोलते हैं, और वो हमको यहाँ से जाना पड़ता है। ये पहले हम यहाँ से गए थे, अभी हम यहाँ से जाएंगे क्रिएट शेड्यूल इशू स्लिप के लिए। तो अभी देख सकते हैं हम लोग कि MIDC देन फ्रॉम डिपार्टमेंट, अरे तुमचं लॉग इन करावं लागेल ना? नाही, इथे मला घेता नाही येणार ना? नाही ना, माझं नाव नाही ना. प्रोडक्शन, माझं नाम टाकून, एक मिनट हाँ. ये मैं थोड़ा मेरा ऑथराइजेशन डाल देती हूँ क्योंकि मेरा नहीं है इसमें प्लेटफॉर्म ना. ये क्रिएट शेड्यूल इशू स्लिप में जा रही हूँ मैं. हाँ. इसमें MIDC डाला है फ्रॉम डिपार्टमेंट. हमने क्या किया है कि एक डिपार्टमेंट, एक स्टोर हमारे पास दो तीन है, लेकिन मेन मेन स्टोर जो है हमने कंसिडर किया है दैट इज स्टोर इलेक्ट्रिकल. मतलब जब भी हम कोई भी शेड्यूल लेने का ट्राई कर रहे हैं तो कोई भी शेड्यूल जो है हमारा स्टोर इलेक्ट्रिकल से ही जाएगा, ऐसा एक वर्कअप करके रखा है इंटरनल ERP में. ओके. तो मैं स्टोर इलेक्ट्रिकल में क्लिक कर रही हूँ, टू डिपार्टमेंट प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म. तो अभी कैसा रहता है कि कॉम्बिनेशन कोड जो है वो कोड हमको पहले डालना पड़ेगा, और वो कोड में जितना भी लगा हुआ है कॉम्बिनेशन कोड में आएगा. एक सेकंड ना, थोड़ा रुकना पड़ेगा. हेलो, हाँ सर. हाँ, बरं, बरोबर आहे. ठीक आहे, मग आता हे लोगो कोणाकडनं मिळणार आहे आपल्याला? चालेल सर, चालेल चालेल. बाकी काय, बाकी PS ला वगैरे काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. ठीक, ग्रेट, भारी. क्वांटिटी कंटिन्यू करायची 4180. ठीक आहे, चालेल सर. ओके ओके. आई एम अवेलेबल. तो प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म में हम क्या कर रहे हैं कि एक कॉम्बिनेशन का शेड्यूल लेने की कोशिश कर रहे हैं. Okay. सो इथे ना, इथे ना सिलेक्ट कॉम्बिनेशन. हाँ, तो ये तीन चार जो ये इशू स्लिप में ये ऊपर के आइकॉन अलग थे, अभी कॉम्बिनेशन मतलब कि शेड्यूल इशू स्लिप में जो आइकॉन है वो अलग है. सो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है जब भी हम ऑर्डर प्रोसेस करते हैं. मतलब कि सपोज एक मॉडल है, उसके साथ दो एक्सेसरीज है, तो वो मिलाकर के एक कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे हमारा पहले बात हुआ है. तो वो कॉम्बिनेशन जो है वो जब भी ऑर्डर प्रोसेस होगा तब अपने आप बन जाएगा और वो ERP में सेव हो जाएगा. सो जब हम आपने जो रिपोर्ट बनाया, आप ही ने बनाया वो रिपोर्ट शंतनु 3B आई थिंक, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि IC0 ऐसा करके कोई तो भी आता है और उसके सामने 3-4 नंबर्स होते हैं. तो वो दैट इज द कॉम्बिनेशन कोड. So we go according to that combination code only whenever it comes to production. तो ये यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूंगी तो मेरे पास कॉम्बिनेशन कोड है, मतलब कि जो भी प्रोडक्शन वाला आदमी है उनको पता है कि मेरे को क्या प्रोडक्शन करना है, तो वो सिर्फ यहाँ पर कॉम्बिनेशन कोड डालेगा IC00937973. काही अर्जंट असेल तर बोला, नाही तर मला काम चाललंय.
तो ये अभी कॉम्बिनेशन कोड है IC009733। अब देख सकते हैं हम इसमें कि एक प्लेटफॉर्म का मॉडल है, उसमें एक बैटरी है एंड देयर इज वन ऑन मशीन डिस्प्ले। सो ये तीनों मिला करके ये कॉम्बिनेशन कोड बन गया है जब भी इन्होंने ऑर्डर प्रोसेस की है। सो वी विल गो फॉर दिस कॉम्बिनेशन, से ओके, नाउ इट विल आस्क फॉर quantity again. Same thing, just like that PCB. I'm going for 1. चार नाही जायचं का? बरं ठीक आहे. I'm going with 4. Then I will say okay. अभी ऐसा हुआ है कि ये जो स्लिप दिख रही है इसमें आई थिंक कितने आइटम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आइटम्स है. 12 आइटम है ना, असं काय करताय? अच्छा वरती आहेत का? बरं हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 आइटम्स है. ये 17 आइटम्स जो है वो स्टोर इलेक्ट्रिकल से में हमको मिलने वाले हैं. लेकिन अभी और भी कुछ आइटम्स है जो स्टोर मैकेनिकल से मिलने वाले हैं, लेकिन वो हमको यहाँ पे नहीं दिखने वाले हैं. स्टोर मैकेनिकल की ऑटोमेटिकली एक अलग सी इशू स्लिप बन रही है अंदर जब भी हम इसको सेव करेंगे. तो क्वांटिटी 4 आई हैव गिवन ओके. देन अवेलेबल क्वांटिटी हे उडवून टाकू का बॉन्ड क्विक? हाँ, सो ये बॉन्ड क्विक जो आइटम है दैट इज consumable, that is available at our production platform. So I am just removing this item and now everything is available. वो रेड में दिख रहा था उसका मतलब ऐसा था कि वो आइटम हमारे स्टोर इलेक्ट्रिकल में अवेलेबल नहीं है. तो रेड में अगर आता है और अगर मुझे पता है कि ये प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, दैट आई कैन रिमूव, बिकॉज वो वहां पर अवेलेबल है तो मैं मेक जरूर कर पाऊंगी, लाइक दैट. सो मैंने अभी शेड्यूल ले लिया है 4 मशीन्स के लिए, रिसीव्ड बाय दैट हेड ऑफ प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म डिपार्टमेंट. अगर मैं अभी इसको सेव करती हूँ तो यहाँ पर स्टैंपिंग प्लेट नंबर अगर आप देख रहे हैं तो ये अभी ब्लैंक दिख रहा है हमको पूरा यहाँ पे, राइट. तो ये नंबर हमको दिख जाएंगे. पहले ये देख लेते हैं कि अगर इसमें कुछ नोट मैंने पहले ऑर्डर प्रोसेस करते वक्त डाली है तो वो नोट यहाँ पर आ जाएंगी, लेकिन अभी इसमें नोट नहीं थी इसलिए नोट नहीं दिख रही है और क्वांटिटी 4 दिख रही है. देन अगर मैं इसको अगर सेव करती हूँ तो मेरे को अपने आप वो 4 फर्दर नंबर्स दिखाएगा. These are the स्टैंपिंग नंबर्स जो सीरियली आगे आगे चलते रहते हैं. मतलब कि 607292939495. इसके बाद में अगर नेक्स्ट कोई शेड्यूल इशू स्लिप डालने के लिए जाऊंगी तो 96 के आगे के नंबर आते जाएंगे अपने आप. दिस नंबर गेट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड विद इन ERP. ये M जो आया हुआ है प्रीफिक्स, ये हमारा MIDC फैक्ट्री में बिजनेस लोकेशन में हमने लेबल नंबर जो डाला था वो M डाला था, इसलिए यहाँ पर ये M आ रहा है, राइट. तो अगर मैं अभी इसको ओके कर दूं, मैं इसको आइटम कोड C005005. चंदन सर, ये आइटम नेम जो है यहाँ पर दिखा रहा है हमको स्टैंपिंग प्लेट. मतलब कि हर मॉडल में हमने एक ऐसा आइटम डाला हुआ है कि जो जिसमें स्टैंपिंग प्लेट है, तो वो आइटम वहां पर दिखा रहा है, वो कोड हमको यहाँ पे दिखा रहा है. ठीक है, तो ये बहुत डेप्थ है. मतलब ये तो मैं ऊपर ऊपर ही बात करूंगी मैं आपसे पहले. तो ये अगर मैं सेव करती हूँ तो ये 4 का शेड्यूल अपने आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला जाएगा.
ये नंबर मैंने लिख के रखे हैं मेरे यहाँ पर M607292 टू 607295। तो मैं अभी इसको सेव कर देती हूँ। अभी ये दो इशू स्लिप रेडी हो गई है। अगर हम देख रहे तो हमने एक ही डाला था लेकिन दो क्रिएट हो गई है। एक स्टोर इलेक्ट्रिकल टू प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म, सेकंड इज स्टोर मैकेनिकल टू प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म। ये ऑटोमेटिकली तैयार हो गई है। ये पेंडिंग दिखा रही है। अगर मैं इसको मॉडिफाई इशू स्लिप में जाकर यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो इन चार मशीन्स के लिए मुझे प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म पर स्टोर मैकेनिकल के लिए जो आइटम चाहिए वो सब दिख रहे हैं। अगर मैं इनको भी रिसीव कर लेती हूँ तो तिथं नंबर आलेच नाही तर ये नंबर जो है वो हमने जो लिख के रखे हैं वही नंबर दिख रहे हैं अभी। ये सिर्फ अभी जो रिमेनिंग मटेरियल टू बी टेकन फ्रॉम स्टोर मैकेनिकल वो सब आइटम्स यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। अगर मैं इसको भी सेव कर देती हूँ तो ये दोनों स्लिप्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी और द मटेरियल विल बी मूव टू प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म इन ईआरपी। इसको मैं सिर्फ अपडेट कर देती हूँ। तो अभी ये दोनों इशू स्लिप्स जो है वो कंप्लीट हो गई। मतलब कि प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म पर हमारे लिए ये चारों कॉम्बिनेशन का मटेरियल जो है वो आ चुका है। अभी सपोज ये मेरे मशीन्स बन गए हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक एंट्री। पहले हमने पीसीबी का मेक देखा था, अब हम मशीन का मेक देखेंगे। क्लिक तो यहीं पे करना है न्यू मेक पर। फैक्ट्री एमआईडीसी है लेकिन अभी डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन आ गया, प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म। प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म करते ही ये क्या हो गया कि ये सिलेक्ट आइटम नहीं आ रहा है। अगर मैं प्रिपरेशन देती थी तो सिलेक्ट आइटम आता था और वहां पर मेरे को कोड डालना पड़ता था, लेकिन अभी प्रोडक्शन देते ही इसमें प्रोडक्शन का टिक लगा हुआ है डिपार्टमेंट में, इसलिए ये सिर्फ हमको कॉम्बिनेशन कोड मेक के लिए ही डेटा दिखाएगा। सो आई एम गोइंग विथ M607292। तो ये हमको सब इंफॉर्मेशन इसके बारे में आ गया कि उसके लिए कॉम्बिनेशन कोड ये था IC009733। क्वांटिटी ये हमको एक दिख रहा है। एम्प्लॉय अगर मैं डाल देती हूँ और इसको मेक अगर बोल देती हूँ तो ऍड एंड कंटिन्यू। हाँ तो ते शेवटी काय 1 बाय 1 हाँ ऍड एंड कंटिन्यू। हाँ इथे आयटम इन्फो दाखवतो का तो आपल्याला? नाही का? नहीं, ठीक है। ये क्लियर है ना? हाँ, तो अगर मैं एड एंड कंटिन्यू बोलती हूँ इसको तो फिर से ये न्यू मेक पर ही आ जाएगा। तो फिर ये पहला तो ये मेक कर देगा और ये जो M607292 नाम का स्टैंपिंग नंबर का कॉम्बिनेशन है IC009733, ये हमारे प्रोडक्शन में मेक हो जाएगा एक क्वांटिटी से। इसको मैं ओके कर देती हूँ पहले तो ये बोलेगा हमको कि पिक कंपोनेंट लेबल। हाँ, अभी ये इसमें ऐसा है सर कि थोड़ा ट्रेसेबिलिटी जो पॉइंट रहता है हमारा कि कौन से स्टैंपिंग नंबर में कौन सा लोड सेल या फिर कौन से पीसीबी। हमारे वेइंग स्केल में दो ही इंपॉर्टेंट चीजें है, एक तो लोड सेल है, एक पीसीबी है। तो उसके बार कोडिंग के लिए सर ट्राई कर रहे हैं कि वो कौन से मशीन में गई है। तो अगर ये यहाँ पर हम करना चाहते हैं कि कौन सा लोड सेल यूज हुआ है तो उस लोड सेल का कोड हम यहाँ डाल पाएंगे, ऐसा कुछ तो भी एक
करने के लिए दिया हुआ है एक। मैं एकदम डिटेल नहीं बता पाऊंगी आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि आइटम में दिया हुआ है उसका एक लिंक, अगर आपको याद है तो हैज लेबल करके एक लिंक था आइटम डिफाइन करते वक्त। तो उसमें अगर हम टिक करते हैं हैज लेबल, तो इन्वर्ट करते वक्त उसी आइटम को हम एक बारकोड का स्टिकर चिपका देंगे, और वो यूज होकर के ये सपोज स्टैंपिंग नंबर हमारा बन रहा है फाइनल, तो वो स्टैंपिंग नंबर बारकोड से हम यहाँ पे रीड कर लेंगे, और वो इस M607292 में ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। फर्दर व्हेन दिस स्टैंपिंग नंबर मॉडल इज sold to any customer, then we can easily check which load cell was attached to this stamping number, like that. Okay. तो ये थोड़ा सा मतलब कि आगे आने वाली बात है ये, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये क्यों आया है। इसमें फिलहाल इसमें एक ही है, स्टैंपिंग प्लेट जो है उतनी ही एक ट्रेसेबल चीज है, जो कि जिसके ऊपर हमारा जो स्टैंपिंग नंबर जो है वो एनग्रेव किया होगा। इसको मैं ओके बोल देती हूँ, ओके ना। तो अभी ये मैक में आ गया ये सब कुछ। ये हमारा 9733 था, ये अभी एम्प्लॉय कौन सा है उनका नाम आ गया है। उसके साथ ये एक्सेसरी 1 एक्सेसरी 2 थी, और वो उसके साथ ऑटो मेक होने वाला एक थिंग था, वो हो गया मेक। और अगर मैं कॉम्बिनेशन में जाती हूँ ये, तो ये हमको अभी 4:11 पर इसका मेक हुआ, ये दिखा रहा है हमको। अभी स्टॉक जो बड़ा है मशीन का, वो प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म पर बड़ा है। मतलब कि अगर मैं जाऊंगी अभी काय काय हो ना गेला का, हाँ ओके। वन थिंग अगेन कि ये जब मेक हो रहा है ना, तो ये प्रोडक्शन टू क्यूसी अपने आप चला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक हर एक डिपार्टमेंट में एक रूल लगाने का हमारे पास दिया हुआ है। Okay. आफ्टर मेक लिंक्ड टू क्यूसी डिपार्टमेंट। तो ये जब प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म डिपार्टमेंट हमने क्रिएट किया, तो उसके वो मेक होने के बाद वो कहाँ जाना चाहिए, उसकी लिंक हमने यहाँ पर दे के रखी है। तो क्या हुआ, मेक होने के बाद दैट इज ऑटोमेटिकली मूव्ड टू क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल प्लेटफॉर्म डिपार्टमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करती हूँ, क्या है बोला, कॉम्बिनेशन कोड का है IC009733 ना। तो क्वालिटी में अभी ये एक दिख रहा है हमको। ओके। ऐसे और सभी क्या क्वालिटी के लिए अलग अलग है क्या प्रोसेस? जितने बेस हमारे है ना, मतलब कि सपोज टेबल टॉप का एक बे है, तो प्रोडक्शन टेबल टॉप टू प्रोडक्शन टू क्यूसी टेबल टॉप, प्रोडक्शन